Hello students, welcome to my class and today's our English language class, and today we're gonna start a new chapter 15, the selfish giant, page number 121, 122, 123 and 124. Okay students, so let's start. So here the selfish giant. So selfish giant किसने लिखा है? ऑस्कर वाइल्ड ने. Okay. Oscar Wilde was an Irish novelist, short story writer, playwright and poet. Okay. So every afternoon, as they were coming from school, the children used to play in the giant's garden. It was a large, lovely garden with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the spring time broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. How happy we are here, they cried to each other. तो जब भी बच्चे लोग स्कूल से आते थे तो वो एक गार्डन में खेलने जाते थे जो एक जाइंट्स का गार्डन था, और वो बहुत ही खूबसूरत था. One day the giant came back. He had been to visit his friend, the Cornish ogre, and had stayed with him for 7 years. After the 7 years were over, he had said all that he had to say, for his conversation was limited, and he determined to return to his own castle. When he arrived, he saw the children playing in the garden. So एक दिन जाइंट वो लौट के आया. वो 7 years तक अपने फ्रेंड्स के वहाँ पर था. अभी वो वापस आया है. तो जब वो वापस आया तो देखा कि बच्चे लोग खेल रहे थे उसके गार्डन में. What are you doing here? He cried in very gruff voice, and the children ran away. तो वो बहुत ही चिल्ला के बोले और बहुत ही गुस्से में आके कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो. तो बच्चे लोग सब भाग के चले गए. दिस इज़ माई गार्डन, सेड द जायंट, एंड आई विल नॉट अलाउ एनी बॉडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ. So he built a high wall all around it and put up a notice board. Trespassers will be prosecuted. तो ये उन्होंने लिख के टांग दिया था एक वॉल खड़ी करके जे कोई नहीं आएगा. He was a very selfish giant. The poor children had now nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. They used to wander around the high wall when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside. How happy we are there, they said to each other. बेचारे बच्चे, अब उनके पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं था. रास्ता था वो जो बहुत ही धूल स्टोन से भरा हुआ था, और जब भी वो स्कूल से वापस आते तभी वो ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में सोचते थे, बोलते थे कि कितना खुश थे हम वहाँ पे. Then spring came, and all over the country there were little blossom and little birds. Only in the garden of the selfish giant it was still winter. The birds did not care to sing in it as there were no children, and the trees forgot to blossom. Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. The only people
who were pleased with the snow and the frost. Spring has forgotten this garden, they cried. So we will live here all the year round. The snow covered up the grass with her great white cloak, and the frost painted all the trees silver. Then cried invited the north wind to stay with them, and he came. He was wrapped in furs, and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. स्प्रिंग आया, पूरे देश में आया, पर उस गार्डन में नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे बच्चे नहीं खेलते थे, वहाँ पे बच्चे नहीं थे. एक फ्लावर भूल के वो निकला था, पर जब देखा वो नोटिस बोर्ड, वो फिर से अंदर चला गया. तो स्प्रिंग तो उस गार्डन में आना ही भूल चुका है. नॉर्थ विंड आया है वहाँ पे. नॉर्थ विंड वहाँ पे अपना मतलब बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बहता है और सारा दिन रहता है और रोड करते रहता है. This is a delightful spot, he said. We must ask the hell for a visit. So the hell came. Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till they broke most of the slates. And then he ran round and round the garden as fast he could go. He was dressed in grey and his breath was like ice. सो वो पहले कैसल के रूफ में जाता है, उसके बाद वो गार्डन में जाता है. पर तो इतना ठंड क्यों है यहाँ पे? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट. मुझे पता नहीं कि स्प्रिंग अभी क्यों नहीं आ रहा है. said the selfish giant, and he sat at the window and looked out at his cold white garden. I hope there will be a change in the weather. तो वो खिड़की के पास बैठा था और यही सोच रहा था कि कब ये वाइट गार्डन कब मतलब सुंदर होगा, कब यहाँ पे वेदर चेंज होगा. बट द स्प्रिंग नेवर केम, नॉट द समर. The autumn gave golden fruit to every garden, but to the giant's garden she gave none. सो स्प्रिंग तो कभी नहीं आया, ना ही समर आया, ना ही ऑटम आया. जायंट्स के गार्डन में कुछ नहीं आया. जायंट्स गार्डन शी गेव नन. ही इज़ टू सेल्फिश, शी सेड. So it was always winter there, and the north wind, and the hell, and the frost, and the snow danced about through the trees. तो सारे मतलब विंटर ही है वहाँ पे. और विंटर का मतलब जितना भी मतलब ठंड होता है उसके गार्डन में है. One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must the king's musician passing by. So एक सुबह क्या हुआ, जाइन उठ गया अपने बिस्तर से. कुछ म्यूज़िक उनके कानों में आई और वो किसकी थी पता नहीं. तो उसने सोचा कि शायद किंग्स के म्यूजिशियन है, वो यहाँ से पास हो रहे हैं. अच्छा, नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे. ओके, सो आज के लिए इतना ही. सो टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग.